Within a few months, when I say a few, that means maybe maximum 3 months, the world is going to divide into 3 blocks. एक रिवायती यूरोपियन अमेरिकन ब्लॉक, एक चाइनीज़ रशियन ब्लॉक और एक नया ब्लॉक होगा जो इनकी इन हरकतों ने जिसको जन्म देना, जिसको मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं. अब आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, यार ये मुस्लिम्स, ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं मुसलमान ममालिक पे, जो ऑयल रिच कंट्रीज़ के ऊपर, या ये जो हमारे वाले मुसलमान हुक्मरान हैं. You will see a lot of change, not only in faces, you will be seeing a change in the systems. The entire government, the entire edifice of the government, the edifice of the political culture will change. जब वो चेंज होगी तो फिर आपको कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा बहाना, ऐसा ढकोसला नज़र नहीं आएगा. इन्हें तो अपनी फिक्र पड़ जाएगी. आई विश मैं आपको वो स्लम्प्स की तस्वीरें दिखा सकता, ऐसे ऐसे स्लम्प्स जहाँ अमेरिका में फ्यूचर प्रोजेक्शंस दिखाते हैं ना कि अगले 7-8 साल में दिस इज गोइंग टू बी द आउटस्कर्ट्स ऑफ लॉस एंजलिस, वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड. मैं आपको अभी, ये तो प्रोजेक्शन है ना, एआई पे बनी प्रोजेक्शन हो सकती है. मैं आपको रियल लाइफ कल नेब्रास्का या समवेयर इन टेनेसी, दोनों में से किसी एक जगह पर इंतहाई चिली सर्द माहौल में कोई 2.5 किलोमीटर 2.5 मील लंबी, वहाँ पे मील चलते हैं, 2.5 मील लंबी लाइन थी फूड स्टैम्प्स की. खाना लेने के लिए लोग खड़े थे वहाँ पे. दिस इज़ अमेरिका. हम अमेरिका का वो रूप देखते हैं. मेरी बीवी कल परसों वापस आई है वहाँ पे अपने अजीज़ो अकारिब से मिल मिला के, वो तो बड़े एफ्लुएंट है. वो पाकिस्तानीज आर वेरी एफ्लुएंट देयर, इंडियंस आर वेरी एफ्लुएंट, all immigrants are very affluent because they are very successful people. Actually they had been running America. ये तो बात करते हैं ना अब कि इमिग्रेंट्स ने आके हमारा ये करे. इमिग्रेंट्स ने तुम्हारा मुल्क चला के दिखाया, तुम उनके बगैर चला के दिखाना, फिर तुम्हें मानेंगे. आई थिंक सर यू गॉट योर आंसर. जी जनाब. अच्छा सर, आए दिन हम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में ये सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और दुनिया में उसकी अहमियत जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है. आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये कोई दफांग, कोई झूठ, इससे बड़ा झूठ को हो सकता है? पाकिस्तान तनज़ली की राह पर गामज़न है एंड पाकिस्तान हैज़ वर्चुअली हिट द रॉक बॉटम. वो जो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इसके बरक्स है, या वो नाबीना है या पागल है या झूठा है या हमें नाबीना और पागल समझता है. दैट्स माय आंसर. मेरा ख्याल है आज तक इससे ज़्यादा मुख्तसर जवाब इस शो में कोई नहीं हुआ. चले, बहुत शुक्रिया. बल्कि मुझे खुशी होती है आप ऐसा क्रिस्पी सा सवाल करें कि मेरा कैथारसिस भी होता रहे. और मैं आपको, और नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अब हद होगी, पाकिस्तान इज़ मदर. ये लुत्फ़ होता है, ये खूबसूरती होती है इंटरैक्टिव प्रोग्राम की, इंटरैक्टिव डिस्कशन की, कि बात से बात निकलती है. तो ये भाईजान बैठे हैं जो ग्रे जैकेट वाले, ये कह रहे हैं कि इसी बात से मैं आगे को बात करना चाहूँगा. माइक इन्हें दे दीजिए. आपने बिल्कुल हिट अच्छा किया कि जब हम 70s में इधर आए थे उस वक्त इस मुल्क के हालात कुछ और थे. वेरी ग्रीन, बहुत अच्छे हालात थे इकॉनमी के हर तरफ. मगर अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, आगे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि माँ बाप को, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. वो कहते हैं कि डैड इस मुल्क में फ्यूचर नज़र नहीं अच्छा आ रहा है. इस मुल्क में, यूके की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल. हमारी नज़र भी यही कह रही है. जो मेरे वालिद आए थे 58 में और मैं 70s में आया, तो हालात नज़र आ रहे हैं हमें. तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी और जगह जाना चाहते हैं. ठीक हो गया. वो ज़्यादातर क्या देख रहे हैं कि किसी मुस्लिम कंट्री में चले. वो दुबई देख रहे हैं, सिवाय दुबई के कहीं और नहीं जाना चाहते. बिल्कुल, कतर देख रहे हैं. सवाल ये है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए इन पाकिस्तान. जी फ़िलहाल तो भाई मैं बड़ी माजरत से, अफसोस से, कदरे शर्मिंदगी से बताऊंगा कि फ़िलहाल तो दूर दूर तक कोई अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या, आप खुशकिस्मत हैं कि आप इधर बैठे हैं. वहाँ चले जाएं तो पता नहीं वापस भी आपको कोई आने देगा कि नहीं. वहाँ पर तो एक कारोबार ये शुरू हो चुका है कि ऐसे ही ऑफलोड कर लेते हैं दूसरे को भी. किधर जा रहे हो, तो इधर आओ, तुम्हारा वहाँ पे क्या है, मतलब को काम कर रहे हो, 2 लाख रुपया दो फिर जाने देंगे. आप किसी के भी वाकिफ़ क्यों ना हो, बग़ैर पैसा दिए फ़ाइल को पहिए नहीं लगते. जब माशरा इन्हतात पजीर हो ना, और इन्हतात डिटेरियोरेशन मोरालिटी की बात कर रहा हूँ,
ہم مورل ڈیٹیریشن کی انتہاؤں کو چھو چکے ہیں. یہ ہے وجہ جو میں نے بھائی جان کو ایک لمحے کے اندر جواب دے دیا تھا کہ جب صورتحال یہ ہو میں کیسے مان لوں کہ پاکستان شاہراہ ترقی پر گامزن ہے. ہرگز نہیں ہے. فی الحال ایتھیوپیا چلے جائیے گا, آپ زمبابوے چلے جائیے گا, پاکستان از ناٹ دا رائٹ ڈیسٹینیشن ایٹ دا مومنٹ. بٹ اف یو کین ویٹ فار 3 months, مے بی 6 months, مے بی 2 months, کیونکہ اٹس اے میٹر آف منتھس ناؤ, منتھس اینڈ ویکس ناؤ. پاکستان انشاءاللہ از گوئنگ ٹو ٹیک آف. وہ آپ کو نظر آ جائے گا, مجھ سے پہلے آپ کو نظر آئے گا. اور اس وقت پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کنزیومر گڈز بناتے ہیں. دیکھا جائے تو آپ کا پروڈکٹ بھی کنزیومر گڈز میں آتا ہے. کنسٹرکشن کا کام بے پناہ ہوگا کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے پاکستان کی. نئے شہر بسائے جانے ہیں. یہ میں اس بلو پرنٹ کی بات کر رہا ہوں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں بڑے غور سے, قریب سے, کہ ایک ایک کلسٹر, پتہ نہیں وہ مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں, مجھے کنسلٹ کرنا پڑے گا, کہ لیٹ اس سے 10 ملین کا, نہیں 10 ملین تو بہت زیادہ ہے, شاید اس سے کم, کہ اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکے گا کوئی شہر. تو اس کا مطلب ہے نئے شہر بنائے جائیں گے, نئی کنسٹرکشن ہوگی. اور ایک ہائی رائز جب بنتی ہے تو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج تقریباً 50 انڈسٹریز حرکت میں آ جاتی ہیں. پینٹ سے لے کے, وائر سے لے کے, سیمنٹ سے لے کے, کنکریٹ سے لے کے, ہر چیز, سٹیل, لوہا, یہ وہ, ہر چیز اس میں ایکٹیو ہو جاتی ہے. جاب اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں. تو مائی سجیشن وڈ بی ٹو فوکس آن پاکستان. Your destination, your ideal destination would be somewhere around between Islamabad and Lahore, between Peshawar and Islamabad, between Karachi and Hyderabad, the whole Balochistan. یہ سارے کے سارے ورجن لینڈز ہیں. تو اس لیے ایون کشمیر میں بڑی اپرچونیٹیز کنسٹرکشن کی اور بڑے بڑے پروجیکٹس کی, ہائی رائزز کی, وہ آپ کو ملنے والی ہیں. لیکن اس وقت جائیے گا جب آپ کی آنکھیں اب خود دیکھ لیں گی اور دل گواہی دے دے گا. اینڈ دیٹ ول ٹیک مے بی اے فیو ویکس فرام ناؤ. ابھی فی الحال ہرگز نہیں, میرے کہنے پہ مت جائیے گا. ہمارے ایک معزز مہمان فرنٹ پہ تشریف فرما ہے, ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے, یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی جناب. Assalamu alaikum, Aftab Bhai, and assalamu alaikum to everybody else in the studio. My name is Jamal, and I was actually born here in Bradford, West Yorkshire, as a Yorkshireman. But my question is, as my respected gentleman next to me who asked you the first question as the first question of this evening's program, and you quite eloquently put it in terms of what you saw the changing, shifting world could be in a matter of months, not years. And it really got me thinking to say, hang on, I'm going to change my question to Aftab Bhai because I'm going to relate to this gentleman and your answer to him. And what I want to ask you is, I'm a second generation that actually sort of was born here. And from my years that I've actually spent in politics, I'm only just starting out, like yourself, as an amateur person in podcasting. And I wanted to do this away from politics because I felt frustrated that I want to engage in dialogue with the younger generation, the next generation. Because why? I feel in terms of the present day that we live in, it's the way it's spiraling out of control. You could say that I am scaremongering. I am not scaremongering. My friend, I am giving you a taste of reality, what may become tomorrow or the day after, or perhaps there is no tomorrow. The reason I say this is when we talk about politics in this modern day, everything's about what's happening in the geo world of politics. Nobody hardly talks about what's happening nationally. It's all what's happening 8,000 miles away, what's happening with Russia, what's happening in Palestine, Gaza, what's happening in perhaps Bangladesh, what's happening in Kashmir. So, what advice would you give in terms of how we can address this situation to positively encourage the next generation? As the other respected gentleman on the back row said, what does he answer to his sons and daughters? Say, Dad, do we have a future here or do we have a future at all? Aftab Bhai, thank you. My suggestion again would be the same, sir. I had been very clear. Pakistan at the moment
cannot be, but maybe in 3 months from now, 4 months from now, can be a wonderful destination. But so far as Bradford is concerned, so far as Britain is concerned, people of Pakistani origin, if they want to ask me what can be the best destination for them, my suggestion simply is any part of the Muslim world, particularly the Middle East. And when I say Middle East, that does not mean the UAE only. Oman is an emerging economy. So is Qatar. Qatar is very rich. Qatar has a lot of promise. And you have not seen Saudi Arabia. We just confine ourselves to 3 cities only: Riyadh, Mecca and Medina. When I say Mecca, means Jeddah. The rest of the Arabian Peninsula is one of the richest areas in the world, still to be discovered, still to be explored. Leave alone the oil, leave alone the rare earth minerals if there are any. So my simple advice would be, wait for a while, let the world decide, let the world be divided into 3 blocks, which I am foreseeing, and things are shaping up. It's not only my vision. I can see on the basis of my analysis that the world is evolving into 3 blocks. And obviously, instead of going to the Russian bloc, Chinese bloc, or the American bloc, why not the Muslim bloc? We belong to the Muslim community. We belong there. Besides, it is an emerging bloc. You will have more opportunities there. So my advice would end there. Don't even think of going elsewhere. Go to Pakistan, go to the Middle East, go to any African Muslim country. When I say African Muslim country, that does not mean Kahira alone. Kahira is a congested city. But all around the Aswan Dam, wonderful areas. I have seen those, I have explored those areas. Go to Alexandria, a beautiful port area, right on the mouth of the Suez Canal. You will be touching the Mediterranean Sea. If you are, depending on what line you are in, if you are in tourism, go to Pakistan. Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, Subhanallah. Not Azad Kashmir, Kashmir, total Kashmir. The best part, our Banff, I would say, if you have been, any of you know what is Banff. Banff is probably by far the sweetest, the most beautiful spot on planet Earth. This is what Google tells us. But maybe we put Banff to shame in 10 years from now, because what we lack in is simply the infrastructure, the will to do, the will to work. And when these things come, rest assured Pakistan is going to surprise. Syria is going to be very beautiful. Beirut, Turkey, Iran, Kurdistan, these are the most beautiful spots on planet Earth. They have not been explored properly. And there are reasons behind it. Let the time come, inshallah, you will not even have to think twice.